So we are starting paper 2 in this class. Mainly in this first class, I will be giving the overall orientation. That's the approach for Indian economy. So to start with, first of all, the content. Explain the content and the approach towards paper 2. What will be the sources and how you can approach entire paper 2, how we can divide it into different segments, what will be the various segments, and for each segment what will be the relevant source, and what is the nature of question, that will also be explained for paper 2. This paper 2 will also help you in general studies paper 3. So second paper, mainly you can divide, or UPSC has divided this paper 2 into 3 parts. One is the Indian economy in the pre-independence era. Indian economy in pre-independence period. You can simply say it is economic history of India. Then the second part is basically Indian economy after independence. But after independence is divided into further 2 parts. One is pre-reform or pre-liberalization. Another is since liberalization. So Indian economy in pre-liberalization era. Indian economy in pre-liberalization period. So it is a economy pre 1991, we can say, before 1991. And third part is Indian economy in the post-liberalization era. Indian economy in post-liberalization period. So this is since 1991. Since 1991. Clear? So when you see the syllabus for paper 2, in the first part, that is Indian economy in the pre-independence era, the syllabus is land system and its changes, commercialization of agriculture, drain theories, laissez-faire theory and critique, manufacture and transport, jute, cotton, railway, money and credit. So syllabus is basically listing certain topics. Usually question will be related to that, but there will be some other question also not mentioned here. And Indian economy after independence. Now after independence has been divided further into 2 parts. Pre-liberalization era, which include contribution of Vakil, Gadgil and V.K.R.V. Rao mainly in the national income accounting. Then agriculture sector include land reform, land tenure system, green revolution and capital formation in agriculture. Similarly, in industry, there are certain topics related to the role of public sector, small scale and so on. National income and per capita income, that means the composition of GDP. What proportion of GDP is coming from agriculture, industry and services, and how it has changed over a period of time. So how the composition of income has changed and how the occupational structure has changed. That means what percentage of labor force was engaged in agriculture and how that has changed over a period of time. Then broad factors determining the national income distribution, which include basically poverty, trends in poverty and inequality. So these were basically for the pre-liberalization period. And since economic reform. So since economic reform, again you will find topics related to the industry, but new industrial policy के context में होगा, new agriculture policy के context में. So the new post-liberalization period include new economic reform and agriculture. So we are relating the same topic with reform. Similarly for industry, जो reform policies है, how it is related to the industry. That means with respect to industry, what reform policies were adopted in 1991 and after that. So
Plus it will also include topics like planning and fiscal federalism and so on. So syllabus is basically dividing it in broadly into 3 parts, but I will suggest divide the syllabus further into 10 different parts. So we have basically divided this entire Indian economy into 10 different parts. That will help. मतलब segregate कर लेंगे अगर ज़्यादा तो ज़्यादा properly आप उसको approach कर सकते हैं. Like for example, one specific topic will be only for agriculture. So when you read agriculture, don't divide it into pre-reform and post-reform. Read agriculture in totality. That means syllabus is saying pre-reform and post-reform. But when you study agriculture, read agriculture in totality. Read industry in totality. Services in totality. Public finance in totality. Monetary management or monetary policy in integrity, because that will help. So you will have an integrated concept after that. That means since 1951 till date 2021 यहाँ तक का growth record clear होना चाहिए, because question will be basically related to that. So you must have a fair idea how Indian economy has performed since 1951. That means once the planned economy development starts. So with the first 5-year plan. So first of all, do write all those 10 different topics, and for each topic what will be the various sources. So this is the syllabus of as mentioned in the UPSC site. Now divide it further into 10 different parts. So the content, for paper 2, one topic will be the pre-independence. Pre-independence Indian economy. When you read this topic for economic history of India, one book that I will be suggesting is basically SSM Desai, and you will be getting study material as well, but you will find this book useful. ठीक है, SSM Desai, economic history of India, short book novel की तरह, but briefly all topics have been given, and the most important part is that it will help you to frame an answer. You can read this topic from other book also. ठीक है, तीर्थंकर रॉय से भी आप पढ़ सकते हैं, बट वहां से आपको आंसर खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पॉइंट्स के फॉर्म में वो आंसर मिल रहा है. ठीक है, बिकॉज दैट विल हेल्प. अल्टीमेटली यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ फॉर्मेट, आंसर के फॉर्मेट में लिखना है, तो वेरियस पॉइंट्स एंड डायमेंशंस यू नीड. सो स्कैन कॉपी ऑफ दिस इज अपलोडेड. ठीक है, इसके स्कैन कॉपी अगर आपके पास अलग से है तो वेल एंड गुड, बट स्कैन कॉपी देयर. इट इज नॉट दैट यू हैव टू रीड द एंटायर चैप्टर. Now obviously you will say which chapter to read and which chapter to leave. For that purpose, first see the questions. The approach in paper 2 will be straightforward. This first, see the question. What are the various questions that has been asked in the section? So we'll find that in the recent past, last 3-4 years, the weightage of this section has been increased. Earlier 1-2 क्वेश्चन आते थे, but आज की डेट में around 5 or 6 parts भी कभी-कभी possible है. So in 20 itself you can find 1, 2, 3, 4 and 5 question. Now 5 question means some question will be of 10 marks, some will be of 15, some will be of 20. So around 60 to 70 marks at least. Sometimes 80 marks तक के question पूछे गए. In 2019 again you will find 1, 2, 3, 4 and 5. So generally 5 questions pre-independence वाले section से पूछे जा रहे हैं. Now once you see all the questions, that means in this section in totality 43 question है there. ठीक है, या 2000 तक का है, मतलब 20 ईयर में 43 क्वेश्चन है. एवरेज वैसे लगाएंगे तो अराउंड 2 क्वेश्चन होना है, बट इसका मतलब है जो डिस्टेंस पास है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन कभी कभी आते थे.
ठीक है, वेटेज कम था, बट लास्ट 3-4 ईयर में वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो आप करंट कंटेक्स्ट में उसको समझ रहे हैं, आज की डेट में उसका वेटेज ज्यादा, सिग्निफिकेंट वेटेज है, सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट, बट मेनली इट इज हिस्ट्री, वी कैन से इकोनॉमिक हिस्ट्री. So you have to learn, write it again and again, then only you will be able to answer it. If the question is on train theory, now you must list all the sources of train. ठीक है, अगर आप 10 याद रखेंगे, हो सकता है 5 या 6 वहां लिख पाओगे, तो डिटेल आपके पास तो लिखा होना चाहिए. क्लियर? सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू आफ्टर reading this question, just list down the topics like one topic is drain theory, another topic is commercialization of agriculture, third topic is, let us say, land tenure system, deindustrialization, railway contribution. तो अगर आप ऐसे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो हार्डली यू विल फाइंड 8 or 9 टॉपिक्स, नॉट मोर देन दैट. नाउ फॉर ईच 8 and 9 टॉपिक यू मस्ट हैव अ रिटन कंटेंट. ठीक है, वो क्लास के कंटेंट भी होंगे, जो स्टडी मटेरियल होगा उसके अंदर भी अलग अलग सोर्सेज है, वो भी रेफर करने हैं. ये बुक भी आप रेफर करोगे, जो पर्टिकुलर चैप्टर होगा इसमें काफी प्रॉपरली वो गिवन है, पॉइंट्स के फॉर्म में गिवन है, इजी रीडिंग है. बट पॉइंट इज मल्टीपल सोर्सेज आपके पास है, मतलब सोर्स को आपको सर्च नहीं करना, बट फ्रॉम जितने भी मल्टीपल सोर्स है उस सोर्स से आपको अपने नोटबुक में पहले उसको लिखना है, और सिर्फ पॉइंट्स लिखने नहीं है. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अ सिनॉप्सिस, यू आर प्रिपेयरिंग अ डिटेल नोट्स. सो डिटेल नोट्स मीन्स ऑन ट्रेन थियरी दे वेरियस डायमेंशंस हो जाएंगे, और उस डायमेंशंस का डिटेल आपके पास डिस्क्रिप्शन होगा अराउंड 200-300 वर्ड्स के, मतलब 2-3 साइट्स आपके पास प्रॉपर्ली रिटन होने चाहिए. अलग अलग सोर्सेस को कॉपी करने के बाद योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू लर्न इट, बिकॉज वो हिस्ट्री है, वो जब तक आप उसको याद नहीं करोगे लिख नहीं पाओगे. ठीक है, और लिखते समय भी आपको वो की वर्ड्स आने चाहिए, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज डिफाइंड इन द कोर बुक, नॉट इन योर लैंग्वेज. ठीक है, वो कोर बुक में जैसे डिफाइन किया गया उसी लैंग्वेज में आपको रिप्रोड्यूस कर देना है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू रीड दिस टॉपिक, source I mentioned, most important source will be SSM Desai, and second will be the study material. तो स्टडी मटेरियल जो यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए प्री इंडिपेंडेंस में, उसमें कुछ सर्टेन चैप्टर्स होंगे फ्रॉम तीर्थंकर राव, इरफान हबीब, तो आपको कंप्लीट बुक नहीं पढ़नी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने. ठीक है, so one part will be this weightage, expect around 5 parts question के फॉर्म में. so one important section is this. now second important topic will be growth, its composition and trend. You can just write down everything in your notebook. Growth, its composition and trend. Growth, its composition and trend. Now this is basically explaining the growth record. So growth record means from 1951 till 2021, ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए. हाउ ग्रोथ रेट हैज चेंज, हाउ द कंपोजिशन ऑफ दैट जीडीपी हैज चेंज, व्हाट इज द ओवरऑल ट्रेंड, और व्हाट वाज द रीजन फॉर चेंज इन दैट ट्रेंड. For example, suppose if you divide this 1950 to 2021, there will be multiple or various phases of growth. From 1950 to 1980, that is first 3 decades after independence, this was characterized by slow rate of growth, popularly known as the Hindu rate of growth, primarily determined by the rate of growth of agriculture. When we explain the growth rate of the economy,
So growth rate means you are calculating growth rate for the GDP. Now GDP comes from mainly sector-wise three sources: agriculture, industry and services. Agriculture, industry and services. Now the share of all three are not equal, so it is not simple average. It is basically a weighted average. So earlier the weightage of agriculture was more. So the growth in agriculture mainly determines the growth rate of the overall economy also. But nowadays the role of service sector is more. So the growth in service sector is mainly determining the growth rate of overall economy. Service sector is mainly determining the growth rate of overall economy. So 1950 to 1980, then popularly we consider that the U-turn of the Indian economy started in 1991, that is reform period. But here you will be studying that the U-turn actually started in 1980. Popular belief is that it occurred in 1991, but actually it started in 1980. So what was the reason for it? Why there was an increase in growth rate after 1980? So how that change in policy or change in approach, rather there was no change in the policy, just there was a change in the attitude of the government. It was basically meant for pro-business. Earlier it was basically, you can say, anti-business approach. Now in 1980 it turned into pro-business approach. So what is the meaning of that pro-business approach? And since 1991, rather than becoming pro-business, it is pro-market. So the growth started in 1980. The momentum picked in 1991. But since 1991 till 2021, अब ये 30 पीरियड का 30 ईयर का पीरियड ले रहे हैं. तो 1980 to 1991 and then 1991 to 2021. It is not that economy is moving in a linear trend. From 1991 to 1997-98, there was high rate of growth, and the obvious reason the economic reform. But since 98 onwards, there was a slowdown. So what was the reason for that slowdown? Important point ये है, आपको सिर्फ वो डेटा याद नहीं करना, डेटा के पीछे जो रीजनिंग होगी वो याद करनी है. So what was the reason for that slowdown? The reason for that slowdown was slowdown in agriculture. Remember, the reform basically related to industrial reform. The word economic reform is wider term. That economic reform includes industrial reform, fiscal sector reform, external sector reform. So there are various dimensions. External sector reform. So where there are various dimensions, but in that dimension we find agriculture missing. So one question that was asked, whether economic reform has bypassed agriculture. क्या रिफॉर्म के प्रोसेस ने एग्रीकल्चर को बाईपास कर लिया, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस है, तो वी कैन से दैट इफ यू फाइंड द रीजन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, तो पॉलिसी के टर्म में अगर रीजन फाइंड करेंगे तो क्या 91 की पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि उसका ड्रॉबैक, दैट इट नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ग्रोथ मोमेंटम was lost in 98 onwards. So 98 onwards to 2003-4 mainly we find a slowdown. So we have to find the reason for that slowdown. From 2003-4 onwards till 2009-10, it was considered as the dream run for Indian economy. Dream run in the sense the growth rate was maximum. So what was the reason for that higher growth rate? And from 2009 onwards again we find a slowdown. अब slowdown के बाद के current aspect में जब आप उसको explain करेंगे तो 2009 to 2021, अब from 2009 to 2021, that means last 12-13 years, you have to break that last 12-13 years also into further parts. From 2009 to say 2016, the year of demonetization. So pre-demonetization and after that. So with now after that also you have to divide now pre-COVID and post-COVID, because if the question is basically say what will be the likely impact on the Indian economy and the world economy in the context of COVID,
So you or explain the growth record in the context of COVID, how growth trajectory has changed due to this pandemic. So it is not that every question will be related to the current. You must be familiar from 1950. Now suppose question आता है कि 1980 onward, pre 1980 what was the trend, so that question is not relating to the current aspect. So from 1950 to 2021 आज की डेट तक का आपको ग्रोथ रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब उसका डेटा याद होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या रिकॉर्ड था, करंट ईयर क्या रिकॉर्ड है, अब करंट ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, जैसे जैसे डेटा अवेलेबल होते जाएंगे वो आपको याद रखना है। पास्ट वाले डेटा अगर आप डेकेडल याद रखोगे तो भी काम चलेगा, मतलब इंटायर डेकेड का। बट इफ द क्वेश्चन इज से एग्जामिन द ग्रोथ एंड इट्स ट्रेंड इन द लास्ट डेकेड, अब क्वेश्चन ने अगर आपको कह दे लास्ट डेकेड को एग्जामिन करना है तो क्वेश्चन जितना नैरो होता जाएगा वो आपके लिए और डिफिकल्ट होता जाएगा, बिकॉज आपको अब नैरो रेंज में आपको ट्रेंड एक्सप्लेन करना है। और अगर क्वेश्चन ने कहा होता है कि एग्जामिन द ग्रोथ ट्रेंड सिंस इंडिपेंडेंस, वो इजी क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सारे फेजेज हैं, हर पॉइंट पे लिखने के लिए आपके पास है। बट अगर उसने लास्ट डेकेड बोल दिया तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, और लास्ट ईयर कह दिया तो और डिफिकल्ट हो गया। तो ये नैरो जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे वो आपको जनरल स्टडीज 3 में मिलेंगे। वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि एग्जामिन द ग्रोथ रिकॉर्ड सिंस इंडिपेंडेंस। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो जीएस 3 के अंदर मिलेगा उसमें रीसेंट वाले क्वेश्चन होंगे, नए टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? सो before I will suggest that before reading any topic in Indian economy paper 2, any student or every student must be reading this topic first. इससे एक ओवरऑल आइडिया मिलता है इकोनॉमी का और हाउ इकोनॉमी हैज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन यू कैन स्टडी सेक्टर वाइज, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इंडस्ट्री में क्या हुआ। जब ओवरऑल पिक्चर क्लियर होगी फिर आप सेक्टर वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज व्हेन यू स्टडी द ओवरऑल ग्रोथ देयर आल्सो यू आर रीडिंग द सेक्टर वाइज। That means agriculture का growth, industrial growth, service sector growth and the overall GDP growth from 1951 to 2021 यहाँ तक का रिकॉर्ड होगा। For earlier record जो EPW के आर्टिकल्स है वहां से मिल जाते हैं, और for recent you have to rely on economic survey। ठीक है, रिसेंट के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पर रिलाई करना है। तो जो लास्ट अवेलेबल होगा वो 2021 का, और फरवरी मार्च के मंथ में जब लेटेस्ट आ जाएगा 22 का उससे अपडेट करना है। तो अपडेट में क्या होगा, लास्ट ईयर का डेटा चेंज होगा, रिमेनिंग कंटेंट वही रह जाएंगे। तो और सर्वे के अंदर भी याद रखिएगा इसमें 2 अलग अलग वॉल्यूम रहते हैं। तो वॉल्यूम 2 आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, वॉल्यूम 1 इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द अप्रोच, सो यू विल फाइंड द डेटा इन वॉल्यूम 2। सेकेंड वॉल्यूम के अंदर डेटा होगा। एंड सर्वे यू हैव टू रीड फ्रॉम 2 पर्पस, एक तो ऑप्शनल के लिए पढ़ना ही है और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, एनी हाउ आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। फैक्ट के अकॉर्डिंगली अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेगा तो भी जो नया सर्वे आएगा वो जो लास्ट ईयर का एटलीस्ट 2 ईयर के सर्वे से फेमिलियर होना चाहिए। सो दैट विल हेल्प इन योर प्रीलिम्स, दैट विल हेल्प इन योर जनरल स्टडीज 3 एंड ऑब्वियसली इट इज हेल्पिंग इन ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो क्लास के अंदर मैं रेफर करता रहूंगा जहां जहां डेटा होगा। अगर सर्वे आपके पास है तो प्रेफरेबली आप इसको अगर ओरिजिनल बाय करके रखे तो ज्यादा बेटर होता है, इससे ये क्लियर होता है, ये कलरिंग जो है, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ी मिक्सअप हो जाता है डेटा। जो रेलिवेंट डेटा होगा वो सारा इंफॉर्मेशन आपको क्लास के अंदर डिक्टेट कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। करंट वाले भी और जो फरवरी मार्च के मंथ में आएगा उस समय भी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वो एक्स्ट्रा 5 डेज के करीब क्लास होती है, वो हर स्टूडेंट जिन्होंने पास में भी कर रखा उनको भी अवेलेबल कराया जाता है। तो अपग्रेडेशन उस समय भी हो जाएगा। तो आज की डेट में अगर हम क्लास करें दैट मींस इन द मंथ ऑफ नवंबर 21, तो नवंबर तक का जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को एडजस्ट करेंगे। आप एग्जामिनेशन अगर 21 के नवंबर में लिख रहे हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो इन बिटवीन अभी इंटायर ईयर है। ठीक है, तो आपको जो मीन्स अगर 22 का लिख रहे हो तो आपके लिए अभी इंटायर ईयर है। इंटायर ईयर में देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। एंड आल्सो वन मोर थिंग,
इवन जब आप सर्वे को भी पढ़ रहे हैं 2021 का सर्वे और उससे पुराना जो सर्वे है मतलब 1920 का जो सर्वे है, यहाँ भी आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आ जाएंगे, मतलब ये ओल्ड सर्वे के अकॉर्डिंग डिफरेंस के एक दो रीजन है, लाइक कभी कभी गवर्नमेंट की जो कैलकुलेशन का जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट हो गया या बेस ईयर को शिफ्ट कर लिया, तो यू विल फाइंड सम कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, वो क्लास के अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है, वो क्लास के अंदर मिले, बट वो ठीक है वो एक्सेप्ट करके चलना है कि यू विल फाइंड सम कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, अलग अलग सोर्स से पढ़ेंगे थोड़े बहुत वेरिएशन रहेंगे, तो सो ऑब्वियसली विच वन टू रिलाई करेंगे आप गवर्नमेंट वर्जन, ठीक है, आप सर्वे का जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, आपको न्यूज़पेपर में कोई डिफरेंट डेटा मिले, मे बी डिफरेंट सोर्स होगा, इंडिपेंडेंट रिसर्च भी रहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टडी भी है, उनके भी डेटा अवेलेबल रहते हैं, वर्ल्ड बैंक का डेटा अलग हो जाता है, IMF का डेटा डिफरेंट हो जाता है, सबके ग्रोथ प्रोजेक्शन भी अलग अलग आते हैं, इकोनॉमी सेम है बट सबके ग्रोथ प्रोजेक्शन भी डिफरेंट है, सो यू हैव टू बेसिकली रिलाई ऑन दिस। तो ग्रोथ रिकॉर्ड में जो स्टडी मेंटल होगा उसके अंदर जो फर्स्ट स्पाइरल है दैट इज बेसिकली डीलिंग विद दिस ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन। एक और पॉइंट जो इसमें एक्सप्लेन करना होगा वो ये है, जनरली आप इंटायर इकोनॉमी के ग्रोथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट विद इन दैट इज द इंटर स्टेट वेरिएशन। तो जब आप ग्रोथ रिकॉर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपने ये 1951 से लेकर के 2021 तक का ग्रोथ रिकॉर्ड कर लिया, बट क्या हर स्टेट यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहा है? अगर यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं हो रहा है तो व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या वो डिफरेंसेस 91 के बाद बढ़ गए हैं और 1991 से पहले कम थे? अगर कम थे तो क्या रीजन है और 91 के बाद बढ़ के हो गए? तो जो इंटर स्टेट डिफरेंसेस है in the 1950 to 1980, the first 3 decades, although the growth rate was low for entire economy, but it was uniform. So it was low but uniform. So when it was low and uniform, that means there was less interstate differences. Since 1991, the rate of growth has increased, but at the same time it is not uniform. So why it was not uniform? Why it is not uniform since 1991? रिफॉर्म तो पूरी इकोनॉमी के लिए हुआ, तो अगर बेनिफिट होना था तो पूरी इकोनॉमी के लिए आप कह सकते हो कि बेनिफिट होना था, बट व्हाई सम स्टेट्स बेनिफिटेड मोर? व्हाई सम स्टेट्स बेनिफिटेड मोर? Some states benefited more, and particularly those states which were in a position to exploit the change in policy. That means, suppose for example you allowed foreign investment. Now if you allow foreign investment, then which state is going to benefit more? Foreign investment will come first to which state? The state already having the pre-existing capability, the state already having the infrastructure, so they attracted more foreign capital, so they benefited more because of that change in the policy. So when you study this part, whenever you study in fact any topic in the Indian economy, एक नेशनल स्टडी करनी है और फिर इसको डिसएग्रीगेट करना है between states. So one part will be also starting this the class with the growth and its composition and trend. After that, this is the second topic. The third, make third topic agriculture. Third topic agriculture. I'm not dividing between it into pre-91 and post-91. ठीक है, just agriculture in totality. So agriculture in totality, but again, before you start this topic agriculture, read the question first, and you will find certain very specific question like analyze the impact of fertilizer subsidy on agriculture productivity growth during the post-reform period. Examine the trend in gross capital formation in agriculture in India during the post-revolution period. Do you think that private investment has been crowded out by the public investment during this period? Examine the efficacy and resilience of the public distribution system in India for providing food security. तो
पहला काम क्या है, इस क्वेश्चन को देख करके जो भी टॉपिक मेंशन हो रहे हैं उसको एक जगह, एग्रीकल्चर आपने जहाँ बिगिन किया वहां पे एग्रीकल्चर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे पहले वो स्टेपल कर लेना अपने स्पाइरल में। ठीक है, मैं जस्ट अप्रोच बता रहा हूँ हाउ इट विल हेल्प। जहाँ पे आप एग्रीकल्चर बिगिन करेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा। अब टोटलिटी में एग्रीकल्चर से 38 क्वेश्चन है। रिसेंट पास्ट में अगेन जनरली 3-4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं। टॉपिक पढ़ के आपने को एक पर्टिकुलर पेज उसके बाद रखना है जहां पे आप एक टॉपिक लिस्ट करते जाओगे। लाइक टॉपिक लिस्ट किया आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कई जगह आएगा अभी, तो बार बार टॉपिक लिस्ट नहीं करना। टॉपिक आपने एक जगह लिस्ट कर दिया, एग्रीकल्चर पॉलिसी एक जगह लिस्ट कर दिया, लैंड रिफॉर्म एक जगह लिख दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन लिख दिया एक जगह आपने, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेंशन कर दी, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर लिख दिया, सब्सिडी इन एग्रीकल्चर लिख दिया, रिसेंट फार्म लॉज लिख दिए रिसेंट क्वेश्चन के लिए। वो क्वेश्चन अभी रिसेंट पास में नहीं है बट यू मे एक्सपेक्ट इट। तो रिसेंट फार्म लॉज हैं तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से लॉज है, नेम, प्रोविजन क्या है, एंड देयर इज कंट्रोवर्सी, व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी, सो यू नीड फैक्ट मोर। सो फर्स्ट वन पेज पे आपको वो कंप्लीट लिस्टिंग करनी है एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस फॉर एवरी टॉपिक रीड वन कोर आर्टिकल। लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है, सो इन द ईपीडब्ल्यू यू विल फाइंड एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल बाय महेंद्र देव। ठीक है, वो स्टडी मेटेरियल में इंक्लूडेड है। आप अगर वो आर्टिकल पढ़ लोगे तो फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, मतलब वो कोर आपको दे रहा है बेस, देन यू आर सप्लीमेंटिंग इट विद योर न्यूज़पेपर आर्टिकल। सो सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, फॉर लैंड रिफॉर्म, तो एक स्पेसिफिक आर्टिकल आपको रेफर करना है। एंड फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वेंशनल अगेन देयर विल बी टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वन विल बी द वेरी स्टैटिक पार्ट, लाइक लैंड रिफॉर्म पे कोई क्वेश्चन है या लैंड टेन्यूर सिस्टम पे कोई क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन है, तो वो स्टैटिक पार्ट है। फॉर दैट पर्पस यू कैन ऑल्सो रेफर मिशन पुरी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए एसएसएम देसाई इजी बुक है। सिमिलरली फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी बाय मिशन, ये यहाँ पे पॉइंट्स गिवन होते हैं, मतलब बोल्ड लेटर्स में गिवन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द मेजर्स गिवन, लाइक क्वेश्चंस ऑफ लैंड रिफॉर्म, सो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, इवैल्यूएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो वैसे स्ट्रक्चर करके आपको अपने नोटबुक में वो क्लास के अंदर भी लिखेंगे, वो नोटबुक में आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? सो you can supplement it with Uma Kapila, but Uma Kapila is basically edited book जिसमें EPW के आर्टिकल से मिलेंगे आपको मेनली। ठीक है, जो स्टडी मेटेरियल के अंदर भी है, बट यू विल फाइंड दिस लैंग्वेज वाइज, कंसेप्ट वाइज बेटर, एनालिसिस भी आपको बेटर मिलेगी, बट लैंग्वेज डिफिकल्ट होगा। और मिशनपुरी में लैंग्वेज इजी मिलेगा। आंसर लिखने के लिए पॉइंट्स है वहां पे, और इसमें आपको आंसर खुद बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स खुद क्रिएट करना पड़ेगा। वहां पे पैराग्राफ के फॉर्म में गिवन है, you have to create your answer, you have to frame the answer, but here you will find the frame of the answer. So I will suggest this, और for certain topic use ये करिए, कुछ टॉपिक के लिए यूज करना। एंड एपीडब्ल्यू आर्टिकल भी अलग अलग सेक्शन में आप यूज कर लो, लाइक फॉर एग्जांपल एनी क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है, लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से अब ईपीडब्ल्यू के अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, वो स्टडी मटेरियल के अंदर भी है, बट इफ यू रीड ओनली वन आर्टिकल बाय डेविड ब्लूम तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है, या केएस जेम्स का आर्टिकल पढ़ लिया आपने ईपीडब्ल्यू का, और कॉम्प्रिहेंसिवली उस टॉपिक को कवर कर रहा है। तो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा कि इस टॉपिक के लिए कौन सा सोर्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ये कॉमन होगा, मतलब एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, पब्लिक फाइनेंस हो, ये दो कोर बुक आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए रखनी है अपार्ट फ्रॉम दी स्टडी मटेरियल। ठीक है, और ये सब कुछ क्लास के अंदर सप्लीमेंट भी होगा, दैट मींस यू आर हैविंग दिस क्लास नोट्स एज वेल, प्लस
your newspaper. अब समटाइम्स स्टूडेंट कहते हैं क्या एपीडब्ल्यू को पढ़ना नेसेसरी है, मतलब बट डिपेंड्स ऑन यू। वो आपको वीकली मिलता रहेगा, हर वीक उस में अराउंड 13-14 आर्टिकल होते हैं, काफी वॉल्यूमिनस हो जाएगा। फिर आप सेपरेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, तो अलॉट ऑफ टाइम वेस्ट हो गया। और ऐसा नहीं कि ईपीडब्ल्यू में जो आर्टिकल है वो आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिल रहा है, वही आर्टिकल शॉर्टर फॉर्म में कहाँ पे आ गया, एडिटोरियल में आ गया। मतलब महेंद्र देव ने यहाँ भी लिखा और महेंद्र देव ने न्यूज़पेपर में लिखा, मतलब एडिटोरियल पेज पे वो भी आ गया। तो जो काम का है वो इन्फॉर्मेशन में मिल ही रहा है, ये नहीं कि आप उसको नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी कोई भी न्यूज़पेपर आप रेफर कर रहे हो या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर वो आर्टिकल आपको दिख जाएगा। ऑब्जेक्ट पर्पज सिर्फ ये कि आप रेगुलरली किसी करंट टॉपिक के टच में रहना है, न्यूज़पेपर के थ्रू या मैगजीन के थ्रू जैसे। So third part is basically agriculture, around you can say 4 question generally agriculture sector से आ रहे हैं। Then after agriculture another is industry, और इंडस्ट्री में सर्विस को क्लब कर दीजिएगा। फोर्थ टॉपिक होगी इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। So again in the industry various parts like industrial growth, industrial policy, public sector role, MSME, disinvestment, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका एग्जामिनेशन इवेल्युएशन, ओवरऑल there is a problem of missing middle in the Indian economy. So what is the concept of missing middle? There are large firm, small firm, medium firm. So what is the concept of that missing middle in the context of industry? Is Indian economy basically a service led economy? Is it over tertiarized? इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे वहां पे। Is it over tertiarized? And one more question like in the recent past economy has witnessed jobless growth. So jobless growth है, that means there is growth but it is not creating job. But why it is not creating a lot of job? And if it is not creating a lot of job, how growth has been sustained? अब यहाँ पे आप पेपर 1 के कुछ कंसेप्ट से भी इस आइडिया ले सकते हैं। That means when we explain growth of economy, now growth is basically in terms of GDP. GDP को यूजुअली मैक्रो वाले सेक्शन में y से डिनोट कर दिया, एंड y इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, वो क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और केनीशियन मॉडल के अकॉर्डिंगली y इज इक्वल टू AD, और AD हैज वेरियस कंपोनेंट लाइक C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली ये हेल्प करता है कि इफ देयर इज ग्रोथ इन y, दैट इज ग्रोथ इन GDP, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट हियर? Is it net export, or is it government expenditure, or is it consumption? जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो सर्वे के अंदर वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा कि हाउ मच इज द कंपोजिशन, हाउ मच इज द रोल ऑफ कंजम्पशन। तो इज इट कंजम्पशन लेड इकोनॉमी? क्या इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है? तो कंजम्पशन का रोल जीडीपी में काफी ज्यादा है। तो जब आप रिसेंट कंटेक्स्ट में कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड, तो कोविड से अगर पर कैपिटा इनकम मेजॉरिटी का अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका लार्जर इम्पैक्ट किस पे होगा? कंजम्पशन पे होगा, और कंजम्पशन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, सो इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी। प्लस जब आप जीडीपी का ग्रोथ एक्सप्लेन करते हैं तो उसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में डिवाइड करते हैं, एंड द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस सेक्टर्स आर डिफरेंट। Employment elasticity means if there is 1% growth in agriculture, how much employment it will generate? If there is 1% growth in industry, how much employment industry will generate?
and if the same 1% growth is in service, how much employment it will generate? So in the service sector, employment elasticity is very low. Employment elasticity low means 1% growth in service will create less job, because service sector is basically productivity oriented, technology oriented. So latest technology is basically helping that growth. So employment elasticity is basically low in the service sector, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. So overall जीडीपी का ग्रोथ तो वो सस्टेन कर रहा है, but it is not creating that much job. So industry and services. Now service sector के लिए अलग अलग आर्टिकल नहीं करना, just 2 आर्टिकल by OPW में इंक्लूडेड होगा रूपा चंदा. ये 2 आर्टिकल हैं, एक पहले लिखे गए और एक रिसेंट वाले, मतलब अपडेटेड हो गए. जस्ट रीड दीज 2 चैप्टर्स. आप एंटायर सर्विस सेक्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन आंसर दैट. ठीक है, ये मटेरियल स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है. इनमें जो भी रेलेवेंट आर्टिकल एपीडब्ल्यू के होंगे वो आपको मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे, या आप नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर देंगे जो रिसेंट भी आएंगे. इंडस्ट्री यू हैव टू प्रिपेयर इन डिटेल, and like for example the question of disinvestment, examine the role of public sector, and in the recent past the policy of disinvestment. So what is the objective of disinvestment, measures of disinvestment, and critically examine that policy. कुछ जनरल क्वेश्चन भी होते हैं, like a new industrial policy was a policy of continuity with change. अब ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, it was a policy of continuity with change. So what is continuity and what was the change? So identify the factors or elements of continuity and identify the elements of change in that policy. तो इंडस्ट्री को अलग अलग फॉर्म में उसको प्रिपेयर करना है डिटेल. सो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. और क्वेश्चन में अगेन यू विल फाइंड जनरली 4 क्वेश्चन. ठीक है, लाइक क्रिटिकली एग्जामिन द स्टडी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंप्रूविंग द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अब ये डिसइन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट ईयर पे जनरली आपको दिख जाएगा. तो यू हैव टू लिस्ट वन टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर एंड देन प्रिपेयर इन डिटेल. बहुत सारे आर्टिकल आपको रिसेंट कंटेक्स्ट में, लाइक एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट है, तो ये सारे बहुत सारे आर्टिकल अभी करंट एस्पेक्ट में मिल जाएंगे. But these type of question, like critically examine the new manufacturing policy 2011 for fostering industrial growth in India. अब ये स्पेसिफिक हो गया, अनलेस आपको इस पॉलिसी का फीचर नहीं पता, यू कैन नॉट आंसर देम. ठीक है, अब क्वेश्चन वो जनरल हो गया, यू कैन आंसर इवन इफ यू हैव नॉट रेड एनी स्पेसिफिक टॉपिक. बट दिस क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं याद है. What are the major problems faced by the small scale industries? Examine the role of MSMED Act 2006. अब ये एक्ट का प्रोविजन अगर नहीं मालूम है, अगेन यू कैन नॉट आंसर दैट. Comment on the role of public sector during the early phase of industrial development in India. अब ये मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन जनरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा. तो आपको वहां पे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं कि यू विल बी फोर्स्ड टू राइट ऑलवेज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन एज वेल. पॉइंट है कि आपने जो पढ़ रखा है, जो आपने रिटन वर्क कर रखा है, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट वो आप बेटर आंसर करो वहां पे. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इनका आपके पास वेल प्रिपेयर्ड आंसर होना चाहिए. अब डिसइन्वेस्टमेंट की क्वेश्चन 2020 में भी और 2019 में भी डिस्कस द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया. तो अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट एज अ टॉपिक के जितने डायमेंशन है, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल, किसी ना किसी ईयर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन. Elaborate on the phenomenon of missing middle in the Indian manufacturing sector. तो मिसिंग मिडल का कंसेप्ट क्या है, बट वो इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं आएगा. और प्रिंसिपल कॉज ऑफ डीएक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द मिड 1960s टू द मिड 1970s इन इंडिया. अभी मिड 1960s टू मिड 1970s में डीएक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सो अनलेस यू डू नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट द फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक तो आपने ट्रेंड ले लिया कि ओवरऑल ग्रोथ का ट्रेंड क्या है, और सेकंड क्या फेमिलियर होना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ट्रेंड. वो परसेप्शन भी अपने दिमाग से हटा देना है कि इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है. इट इज ऑल रीसेंट क्वेश्चन.
करंट वाले क्वेश्चन होते हैं। जी नहीं, करंट वाले क्वेश्चन यू विल फाइंड हार्डली इन 4 और 5 पार्ट्स। आउट ऑफ 28 क्वेश्चन हार्डली 4 और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें करंट का एलिमेंट होगा, रिमेनिंग इज ऑल स्टैटिक। प्री इंडिपेंडेंस 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंप्लीट स्टैटिक है, प्री 91 इंटायर स्टैटिक। सिंस 91 के कुछ क्वेश्चन के अंदर करंट का एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उतना ही वेट, ये नहीं कि आप कंप्लीटली जो कोर रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ करके आप एवरीडे डेली जो न्यूज़पेपर उस पर ज्यादा एफर्ट कर रहे हो फॉर पेपर 2। सो अगेन इन इंडस्ट्री वाले सेक्शन में 38 क्वेश्चन इन टोटल। देखो हाफ एन आवर का टाइम क्वेश्चन को स्टडी करने पे लगा देना, और आधा दिन आपने 2 महीने पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हो तो पता चला 1.5 महीने तो यूजलेस ही पढ़ रहे थे, वो क्वेश्चन में आ नहीं रहा। तो प्रिपरेशन बिगिन करने से पहले का काम है, मतलब आप क्लास को स्टार्ट नहीं हुई भी, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है, इसमें मुझे कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है। ये नहीं बोल रहे कि मिर्जापुर लिया आपने फर्स्ट पेज से लेकर कवर टू कवर उसको पढ़ना है, कोई फायदा नहीं होगा उसका। आप डायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर क्रेडिट ज्यादा मत पढ़ते रहो अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो। वो तो बुक है, उसमें चैप्टर तो मिलेंगे आपको। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि जो मेन क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आ रहा है उसको पहले करना है, जो लेस फ्रिक्वेंटली है उसको टाइम रहेगा तो बाद में करेंगे। क्लियर? then fifth topic will be club all the problems in one, that means poverty, unemployment, inequality and population। poverty, unemployment, inequality and population, ठीक है, ऑल प्रॉब्लम्स को एक जगह क्लब कर लीजिए। दैट मीन्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, inequality before reform, after reform, inequality will also include here interest rate variation as well as the regional inequality, and topics like demographic dividend, population trend, population policy। so all we can say problems, और इस प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हुए एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें सारे कंसिडर हो रहे हैं इसमें। बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम्स, लाइक मतलब जनरल स्टार्ट में लगेगा अच्छा ये टॉपिक है तो लिख लेंगे आंसर हो जाएगा, बट इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस क्वेश्चन वाज इन कंपल्सरी सेक्शन, हाउ इज द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय रंगराजन कमिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ तेंदुलकर कमिटी इन मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। एक 2009 की कमिटी, एक 2013 की कमिटी है। हाउ द मेथोडोलॉजी, मतलब पॉवर्टी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी जो मेथोडोलॉजी है, बिकॉज problem is where to define that poverty line। if you draw that line lower, then you will find many poor। if you draw that line, so depending upon the poverty line, the incidence of poverty will be different। so how that methodology adopted by Rangarajan is different from that of Tendulkar। तो unless अगर आपने दोनों कमेटी रिपोर्ट नहीं पढ़ी हुई है तो उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। so you will find this specific plus मनरेगा से रिलेटेड कई क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं और अभी भी ये वैलिड टॉपिक है। while absolute poverty declines over the decade, the poverty gap between two social group, between different group has increased। तो poverty और population के क्वेश्चन भी काफी है। India has a vast potential to reap a demographic dividend। explain the point and discuss the necessary measures to realize it। अब ऐसे क्वेश्चन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअल में होता क्या है, मतलब इनिशियल जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना है, उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए।
Why it arises? So first of all, you have to define the demographic dividend, that it mainly arises dividend in the sense due to that demographic economy is expected to realize some dividend in terms of growth, and it mainly arises due to change in the age structure composition. तो वो पॉइंट क्लियर रखना है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं, फॉर दैट पर्पस व्हाट वर द मेजर्स. तो फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन क्लब, पॉलिसी के लेवल पे इसको क्लब कर सकते हैं. मेजर्स अलग अलग हो जाएंगे, but if the approach is what was the approach of government towards reduction of poverty and unemployment, then it is common. Employment generation is poverty alleviation also. By creating the employment, you can reduce poverty. So the approach is same. And in the earlier phase, यहाँ भी phase है government के policy के. In the earlier phase, we dependent a lot of on growth. That if we find high growth rate, the problem of poverty and unemployment will automatically be solved. That means the benefit of growth will trickle down to the lowest level. It will trickle down, but that trickle down effect was not working in the Indian economy. So once government realized that the benefit of growth is not trickling down, then for those section, specific programs were launched. So you will not find any poverty alleviation program in 1950s or 60s. All programs are basically started in 1970s. ठीक है, तो 1969 के बाद का अप्रोच डिफरेंट है. आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, वो अप्रोच इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट है. एंड आज की डेट में वही कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. ग्रोथ मस्ट बी inclusive. That means what? It must benefit all. So if you are emphasizing on inclusive growth, it means what? The earlier growth was not inclusive. So growth bypass certain sections. So that growth has to be inclusive. So inclusive growth से related question again, but जो problems है इसमें number of question you will find around one or two क्वेश्चन जनरली मिल जाएंगे, बट वो एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी दैट यू आर रीडिंग ऑल इन वन. सो दिस विल बी द फिफ्थ टॉपिक, एंड सिक्स्थ मेजर टॉपिक विल बी public finance. Next important topic will be the public finance. Now within this public finance is basically dealing with government expenditure and tax or taxation. So tax reform will be an important question within public finance. When we study tax reform, remember you can divide it broadly into two parts: direct taxes and indirect taxes. So a lot of reform has been done in the area of indirect taxes, and all indirect taxes, now we can say culmination of that reform was in the form of, तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, मतलब लाइकली इम्पैक्ट वो पूछा गया, बट अब क्वेश्चन आता है कि चैलेंजेस क्या है, और इज देयर एनी स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन दैट. तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दैट, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी. बट वो कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसका पास्ट पढ़ोगे. व्हाट वाज द प्रॉब्लम अर्लियर. आप इसको ऑप्शनल के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हो, जनरल स्टडीज के लिए नहीं पढ़ रहे कि हमने ओनली जीएसटी पढ़ लिया उठा के. आपको वो कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए. तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का जो फेज है वो 1970s से चल रहा है. तो 1970s में क्या चेंज हुआ, फिर 80s में क्या चेंज हुए, 90s में क्या चेंज हुए, और फिर 2000 के बाद क्या चेंजेस हुए. सिमिलरली देयर आर प्रपोजल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स
लाइक डायरेक्ट टैक्स कोड में कन्वर्ट करना है इसको, तो उसके लिए भी कमेटी का रिकमेंडेशन है, बट वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, मतलब जो लॉज हैं वो काफी ओल्ड हो गए, चेंजेस आ गए बट डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड देयर आर सर्टेन चेंजेस बट नॉट अ लॉट हैज टू बी डन। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आता है दैट एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी टैक्सेशन वेदर यू एग्री और नॉट। अभी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेशन है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रेफरिंग टू इनकम टैक्स की बात हो रही है, सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट टैक्सेशन। Plus, this public finance will also include topics of fiscal federalism. So, Finance Commission, उसके report, 14th Finance Commission, 15th Finance Commission, what was the controversy in 15th Finance Commission? Report, तो फिर tax devolution का criteria, ये नहीं करें कि इंटायर जितने भी पब्लिक फाइनेंस कमीशन है सबके रिपोर्ट आपको याद करनी, बट जो करंट है और जो जस्ट बिफोर दैट था, मतलब 14th और 15th, मतलब फिस्कल फेडरलिज्म के जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, लाइक प्लस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, अब ये एक्ट 2003 का है, but over a period of time it has been modified by the recommendation of various committees. So what was the basic provision of that act, what was the need to modify that act? तो ये इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस हैं वो क्लियर होने चाहिए, मतलब पब्लिक फाइनेंस के अंदर आपको ओवरऑल टैक्स इज वन पार्ट एंड विद इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यू कैन मेनली से इट इज अ सब्सिडी, related to subsidy you will find various questions. So questions in public finance like distinguish between fiscal federalism and fiscal consolidation. अब ये fiscal consolidation word कई जगह यूज किया जाएगा, so what is the meaning of that fiscal consolidation? Discuss the fundamental changes in the Indian fiscal federalism after introduction of GST. मतलब GST के क्वेश्चन आ रहे हैं बट अब उस क्वेश्चन का नेचर डिफरेंट हो गया, और जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था मतलब नेशनल लेवल पे, उस ईयर का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक्सप्लेन जीएसटी, एनालाइज हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन बिजनेस, तो वो 17 के ईयर के लिए वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन आप 21 में वही क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो कि ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा आपसे जाएगा, वो 2017 के लिए इंपॉर्टेंट था, नॉट फॉर 2022 और 21। तो अब जो चैलेंजेस हैं जी रिलेटेड टू जीएसटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टेट क्वेश्चन भी, स्टेट इन द सेंस 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 16 ऑनवर्ड्स जीएसटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये आप कह सकते हो दिस इज द पार्ट ऑफ करंट, बट करंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ में अब ये जो पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें भी तो कुछ करंट होंगे, बट वो 2016 के लिए करंट था, वो आपके लिए अब रेलेवेंट नहीं रहा, उतना रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए नए क्वेश्चन होंगे, तो नए क्वेश्चन होंगे तो नए लॉज वाले क्वेश्चन होंगे, अब रिसेंट फार्म लॉज आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा, तो करंट को आपको इंटेलिजेंटली स्टडी करना है, मतलब पास्ट पेपर पढ़ना भी है और सेफली उसमें से कुछ चीजें हमें क्या करनी है, इग्नोर भी करनी है, उसमें से कुछ चीजें इग्नोर भी करनी है, जो स्टैटिक है वो लेना है और जो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया उसको इग्नोर कर दीजिएगा, दैट मींस डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर। और ऐसे कभी जनरल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब्सिडीज आर अ सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट, जस्टिफाई योर आंसर। So one part will be this public finance से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी है, 41 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये FRBM एक्ट, तो आप 2008 का क्वेश्चन है बट द एक्ट वाज इन 2003, उसके बाद सर्टेन चेंजेस भी थे, तो वो क्वेश्चन फिर 13 के अंदर भी चेंजेस है, तो 2013 के बाद भी ये रेलेवेंट क्वेश्चन हो गया था। रिमेंबर जितने भी टॉपिक आप लिख रहे हैं यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट अ वीक ऑन दैट, तो आप सब्जेक्ट को कंप्लीटली
सारे डायमेंशन आप नोट कर पाओगे। सो 10 पार्ट्स में डिवाइड करें मतलब 10 वीक्स, सो यू कैन से 2 और 2.5 मंथ्स। अगर आप पेपर 2 पे लगा रहे हैं तो वो हो जाता है। देन 7th important part is monetary system and banking. Monetary system and banking. So this will basically include your monetary policy. The fiscal, public finance was dealing with the fiscal, that topic, and monetary management is mainly dealing with the monetary policy. Or within monetary policy, you are including entire banking, which means banking reform. So banking reform was also a part of that structural reform, started in 1991, and most important committee in banking reform, जैसे टैक्स रिफॉर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी नरसिम्हा राव ने नरसिम्हन कमेटी, एमएल नरसिम्हन. So Narasimhan committee report 1 in 91. The same committee was set up again in 96-97 I think. Narasimhan committee second report. तो उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो बैंकिंग रिफॉर्म चल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द रीसेंट मर्जर ऑफ बैंक्स. नाउ द रीसेंट मर्जर ऑफ बैंक्स इट वाज प्रपोज्ड बाय दैट कमेटी. ठीक है, जो सेकंड कमेटी थी 98 में 96 में, उसने वो रिकमेंडेशन दे रखा है. तो उस रिकमेंडेशन को बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं. प्लस क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग प्रॉब्लम, एनपीए, बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक पार्ट आल्सो, लाइक nationalization of banks in 1969 and nationalization in 1980. So if in that year banks were nationalized and now again we can say denationalization भी है, तो उस स्टैटिक क्वेश्चन में बैंक का नेशनलाइजेशन भी क्वेश्चन आया हुआ है. बट जनरली ज्यादातर क्वेश्चन आपको वो आज के कंटेक्स्ट का मिलेगा, लाइक critically examine the role of RBI in maintaining fiscal stability under new regime of monetary system. The role of RBI in maintaining the fiscal stability. Second is why is monetary transmission not effective in the Indian economy. अब ये monetary transmission, this will be mainly explained in the macro section, paper 1. So if you know that how monetary policy works theoretically, then you have to relate it with the Indian context. Why it is not working in the Indian economy? What caused the problem of non-performing assets of Indian Commercial Bank and what cures are being suggested to solve this problem? So NPA's recent past के अंदर ये क्वेश्चन काफी frequently है. NBFC का क्वेश्चन भी है. Financial inclusion as one of the most essential component of inclusive growth. अब like for example financial inclusion है, तो how you can define that term financial inclusion, and it is an important part of the inclusive growth. So what is basically financial inclusion? यहाँ पे exactness चाहिए, और exactness के लिए गवर्नमेंट जो सोर्सेज हैं, लाइक देयर इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बाय नीति आयोग, इंडिया एट 75. ठीक है, उसमें एक चैप्टर है फाइनेंशियल इंक्लूजन का. इनफैक्ट देयर आर मेनी वेरियस चैप्टर्स, वो आप रेफर करो, कंटेंट में ज्यादा बेटर है. लाइक डबलिंग फार्मर्स इनकम पे 3 चैप्टर है, वो आप पढ़ लोगे तो मतलब कोई जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था, मेजर्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो सारी चीजें हैं. तो आई थिंक 8 और 9 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो. तो उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है इनिशियली. दैट इज बैंकिंग फॉर द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड. अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो की वर्ड्स हैं, तो आप टेक्निकल फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन करो. यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट. रिमेंबर मार्क्स कम आते हैं, बट कम आने के रीजन है, और कुछ लोगों के ज्यादा भी बहुत आते हैं. मतलब 158 भी आता है, 160 भी रहता है. मतलब करंट 21 के अंदर 158 160 का स्कोर भी पेपर 2 के अंदर है, और 110 100 बिलो 100 भी हो जाते हैं, वो भी नंबर होते हैं. बट अगर आप 150 या 160 का स्कोर पेपर 2 में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फॉर दैट पर्पस
एग्जैक्ट वर्ड्स, की वर्ड्स आंसर में होनी चाहिए, स्ट्रक्चरिंग आंसर की प्रॉपर्ली होनी चाहिए। ओल्ड काफी जो क्वेश्चन होंगे उसको आप इग्नोर कर सकते हो इसमें, बैंकिंग वाले सेक्टर में। आई डोंट थिंक कि बहुत ओल्ड क्वेश्चन कभी बैंकिंग वाले सेक्टर में पूछेंगे, बट अगेन फॉर दिस पार्ट यू कैन रीड मिशन पूरी वन पार्ट, और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल उस पर ज्यादा ट्राई करना फॉर दिस सेक्शन, बिकॉज इसमें डायनेमिज्म ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। एंड देयर इज अ आर्टिकल बाय राकेश मोहन, इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। राकेश मोहन का एक ओल्ड आर्टिकल भी है, आईएमएफ का वर्किंग पेपर है वो मिडिल में इंक्लूडेड है। तो आप अगर उस राकेश मोहन के उस आर्टिकल को पढ़ लें प्रॉपर्ली, काफी डिटेल है वो, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम आई थिंक वो कवर कर रहा है। तो हमेशा क्या करना है, किसी एक टॉपिक पे किसी एक सोर्स को कोर बना लेना, वो कोर आपका 70 to 80% कवर कर लेगा, नॉट ऑल, बट 70 to 80 जब कवर कर लिया तो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट फिर कम हो जाएगा। तो आप जिस सोर्स को या जिस आर्टिकल को कोर बना रहे हो अगर वो एग्जॉस्टिव है तो बहुत सारा वर्क वैसे भी रिड्यूस हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ अलग अलग न्यूज़पेपर से सप्लीमेंट करना रहेगा। So 7th and the remaining few topics in paper 2. 8th planning and development, इसको आप एक सेपरेट टॉपिक बना लीजिए। You must be familiar with the Indian planning system, but if the question is how Niti Aayog differs from the planning commission, so how that has changed the planning perspective, तो recent question वैसे मिलेंगे आपको, ओल्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, लाइक evaluate the contribution of VK RB Rao in the national income accounting, highlight the contribution of वकील in the CN वकील to the Indian planning। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया, मतलब स्टैटिक क्वेश्चन, इसमें कोई नया चेंज नहीं हो रहा। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ VK RB Rao, वो पॉइंट्स अगर पता हो तो वो लिख देना बस, वकील का कंट्रीब्यूशन क्या वो एग्जैक्टली मालूम, but number of question you will find less in the planning and development section. And the last major important topic will be the external sector. External sector, and related to that is balance of payment and exchange rate. External sector, balance of payment and exchange rate, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। So within external sector, questions like composition and direction of trade, what we are exporting, from where we are to whom country we are exporting, from where we are importing, what we are importing, so how that composition and direction has changed over a period of time. Foreign direct investment, MNCs का role, then within external sector, balance of payment problem, corrective solutions, exchange rate, within exchange rate like questions of करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सो करंट अकाउंट में तो कन्वर्टिबिलिटी है, बट पार्सल देयर इज पार्सल कन्वर्टिबिलिटी इन द कैपिटल अकाउंट। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, व्हाई वी आर नॉट अडॉप्टिंग फॉर फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड भी कमिटी है, उस कमिटी का रिकमेंडेशन क्या है। सो एसएस तारापुरे कमिटी फॉर फाइनेंस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, उसके रिकमेंडेशन क्या है। सो व्हाट वर द पाथ चूजन बाय सेंट्रल बैंक टू कन्वर्ट एक्सचेंज रेट, टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। और इसके अंदर इंडिया एंड WTO, अब ये जो टॉपिक है इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू WTO, यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन पेपर 1 आल्सो। तो इस टॉपिक को हम लोग पेपर 1 के अंदर कवर ना करके पेपर 2 में कवर करते हैं, दैट विल बी बेटर, बट सिलेबस में रखेंगे, दोनों ही जगह मिलेगा। ये पेपर 1 का कंटेंट है, और पेपर 1 के कंटेंट में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, विद इन दैट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द लास्ट टॉपिक इज WTO, ट्रिप्स, ट्रिम्स, डोमेस्टिक मेजर्स, डिफरेंट राउंड्स ऑफ WTO टॉक। ये पेपर 1 के सिलेबस में।
So you may get same question in paper 1 as well as in paper 2, although we will be covering it in paper 2. ठीक है, पेपर 1 में कवर नहीं करेंगे. And the last will be all the recent topics, मतलब जो भी न्यू प्रोग्राम्स होंगे उसको आप लास्ट टॉपिक में ले लेंगे. So your 10th will be all current topic. ठीक है, इसमें all consider all program and scheme. ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम और स्कीम है और जो करंट टॉपिक है उसको एक जगह यहाँ लिस्ट कर लें. So once you are through with all these 10 topics, यहाँ से उसको प्रिपेयर करें. मतलब अप्रोच आपका ये रहना, सिलेबस अपनी जगह, बट आप जब उसको पढ़ रहे हैं तो टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है. 10 टॉपिक्स के लिए फिर उस 10 टॉपिक का इक्वल वेटेज नहीं है, वो भी ध्यान रखना है. हर टॉपिक का वेटेज डिफरेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट जिसका वेटेज है वो एग्जामिन करने के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर है. सोर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ जहाँ टॉपिक आता जाएगा वो सोर्स बताते जाएंगे कि इस सोर्स को हम यूज कर रहे हैं फॉर दिस टॉपिक. क्लियर? तो उस एंगल से बेसिकली प्रिपेयर करना. बट यहाँ पे मार्क्स का वेरिएशन जनरली यू विल फाइंड मैक्सिमम, आई थिंक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाईएस्ट नंबर है ये, बट 130 प्लस माइनस, ये हार्डली वी कैन से 8 to 10 मार्क्स, मतलब 120 to 140 के बीच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं. नहीं भी पढ़ के गए तो भी 110, 15, 20 नंबर आएंगे, और बहुत पढ़ के गए तो भी 135, 40 आएंगे. वेरिएशन इतना ही रहेगा. बिकॉज नहीं पढ़ने का मतलब ही नहीं कि आप ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ रहे थे, बट जीएस के लिए तो पढ़ रहे थे ना, तो आपने उस आइडिया से लिख दिया, उसको गलत नहीं लिखा है. वैसे क्वेश्चन आपने वहां चूज कर लिए जो रिसेंट वाले थे, बट इट डज नॉट मीन कि उतने ही नंबर आएंगे. स्कोर 158 भी इस बार का जैसे हाईएस्ट है, मतलब 158 इज वेरी गुड गिवन दैट नो वन इज स्कोरिंग 300 लास्ट 2 ईयर से. तो अगर किसी का भी 300 नहीं आ रहा, उसमें अगर किसी का 158 आ रहा है तो काफी अच्छा स्कोर हो गया. तो एम शुड बी अराउंड ऑब्वियसली 150 प्लस का होना चाहिए, बट ये रेंज में नॉर्मली वेरिएशन, मतलब रिस्क का एलिमेंट पेपर 2 में कम है, पेपर 1 में रिस्क ज्यादा है, वेरिएशन ऑफ मार्क्स बहुत होते हैं. तो ये हो गया आपका अप्रोच और ओरिएंटेशन. दैट मीन्स बट द टाइम दैट विल बी टेकिंग इन टर्म्स ऑफ लेक्चर वो बहुत कम होता है पेपर 2 में एज कम्पेयर टू पेपर 1. पेपर 1 में जहाँ अराउंड आपको 90 लेक्चर लगेंगे, ये वो लेस देन 50% में ये कवर हो जाता है. 30-40 लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग बेसिकली विद द first topic is pre-independence, that is economic history, that will be taken later on. And growth, its composition and trend. Growth, its composition and trend. So initial few classes will be basically on this topic, and once you are familiar with this topic, then you can read any topic. Then you can read agriculture, we may start with industry, we may do service first, we may do population first, but first of all you must be familiar with the growth and its composition and trend. And when we say growth, so certainly we are determining growth of GDP, so we are referring to that GDP growth rate. But within that GDP growth rate, there will be various sector. So various sector like agriculture growth, industry growth, and service sector growth. And
we must be familiar with what is happening since 1950 to 2021. ठीक है, इस कंप्लीट फेज को आपको एक्सप्लेन करना है एक साथ 1950 से लेकर के 2021. दैट मीन्स नाउ इट विल बी बेसिकली इंक्लूडिंग योर प्री रिफॉर्म पीरियड, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, प्री demonetization period, post demonetization, pre covid and post covid will continue. ठीक है, तो वो कंप्लीट आपके पास एक जगह होना चाहिए सारा. एंड दिस टॉपिक विल आल्सो इंक्लूड योर इंटरस्टेट differences. That means one data will be basically for the aggregate, then it will be disaggregated for various states. And so before starting this topic, so there are various phases. It will help once you know the data, that on what basis we are categorizing into various phases. So one important phase will be the first 3 decades, 1950 to 1980. In that phase, what was overall growth rate, what was agriculture growth rate, what was service growth rate, industrial growth rate. From even this 1950 to 1980s, in certain article you will find it divided into 2 parts. One was the Nehruvian period, so 1965 till 1965. So first 3 5-year plan, and after Nehru. So the growth before and after, that means it can be divided, but broadly first 3 decades is clubbed. Then 1980 to 1990, you can say pre-reform. 1991 to 1997-98, that will be another. And 1998 to 2003-4, that will be another phase. From 2004 onwards to 2009-10, that will be different phase. Then 2009 to 2000, अगर आप उसे डिफरेंट फॉर्मेट में अगर डिवाइड कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्लो डाउन वाज बेसिकली टिल 2014-15, बट चेंज इन गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर कवर कर लें तो 2009 to 2014. And after 2014 to 2016, that is pre-demonetization. From 2016 till date, तो till date 21, इसको फर्दर आप डिवाइड कर देंगे कोविड एंड पोस्ट कोविड. ठीक है. So one purpose is basically to write all the data, and that data you can present it if you know the trend. Remember, exact data अगर याद नहीं भी है, रेंज याद होना चाहिए. एग्जैक्ट ये नहीं करे कि एग्जैक्ट 5.6 लिखना वहां जरूरी है. रेंज अगर क्लियर हो कि ये रेंज है तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली भी. लाइक सेम थिंग इफ यू प्लॉट इट ग्राफिकली in terms of year, that means it is GDP and we write it here year. Then in the first 3 decades there was slow rate of growth. So because of that slow rate of growth, economy is growing at this rate of say 3.5% approximately. From 1980 onwards the growth rate has increased. So if growth rate has increased, this is one turning point. Growth momentum increased 1980 to 1990. 91 onwards, growth trajectory further increased. So further increase, it will become further steeper. 97-98 onwards, so down means you have to negative नहीं है, growth rate कम हो रहा है, economy is growing. Negative सिर्फ कोविड के बाद का है. ठीक है, slope will decrease. ठीक है, फिर 2003 onwards, so again it will have to increase it. So इस फॉर्मेट में अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं ना, वो पिक्चर का इमेज रहता है. देन योर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन ऑल चेंजेस. आपको ये चेंजेस एक्सप्लेन करने, वहां से क्लियर होना चाहिए.
What was the reason in 1980? What was the reason in 1991? What was the reason in 1997? What was the reason in 2003? What was the reason in 2009? What was the reason in 2016? Reason in 2020? ठीक है, तो वो उस फॉर्मेट में कंप्लीट चेन क्लियर होना चाहिए विद फैक्ट. तो एक टेबल में पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. फर्स्ट कॉपी दैट टेबल because that will basically help. Take a fresh page, full page, and you can convert this into this part. Table 1. You can write it here in the period. That means you will write the start from 1950s for that decade. Then 1960s, 1970s, 1980s. मतलब ओल्ड वाले जो डेटा है वो डेकेडल लिख रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप उसको ईयर में ब्रेक करते जाओगे. Here will be writing the year. In that year, what was the growth in agriculture? Growth in industry. Growth in services. And then overall growth, that is GDP growth. So in 1950, the agricultural growth rate was 2.7, industrial growth was 5.6, service 3.9, overall growth 3.6. इनका डेटा ऐसे एक बार देखने से याद नहीं होगा. आप उस डेटा अगर याद करने का ट्रिक ये होगा कि यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन. मतलब जैसे एक हैबिट रखो कि ऑल्टरनेट डे पे आप उस टेबल को देख लो दोबारा. 10 दिन छोड़ देंगे, 1 महीना छोड़ देंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन ठीक है, वो डेटा याद नहीं रहता. आपको ब्रॉडली जो फेज है वो याद रह जाएगा, बट यू विल बी मिसिंग दी एग्जैक्टनेस. 1960s 2.5, 6.3, 4.8 and overall 4. 1970s 1.3, 3.6, 4.4, 2.9. So this was basically the first 3 decade. ठीक है, उसकी बात हो रही है वो. So that first 3 decade, the on an average growth rate was around 3.5, 3 or 3.5, and that was termed by Raj Krishnan as the Hindu rate of growth. That slow growth rate primarily determined by the slow growth in agriculture. So agriculture was mainly determining the growth rate of the economy. From 1980 agriculture growth rate is 4.4, industrial 5.9, service 6.5 and overall 5.6. So overall 5.6, that means this was basically a period of cutoff. ठीक है, different phase हो गए वो. So a marked change in the growth trajectory. So that marked change in the growth trajectory, what was the reason for it?
Arvind Subramaniam called that decision as pro-business approach of the government. So what is the meaning of that pro-business? We will elaborate. So the government approach turned to be pro-business. That means it helped the business sector more by removing the restrictions. तो पॉपुलरली तो 91 लिबरलाइजेशन है, बट एक्चुअल में लिबरलाइजेशन से पहले स्टार्ट हुआ. ठीक है. So the pro-business approach of government, and 1990 was pro-market. It helped the market, promoted the market. मतलब अर्लियर नए फर्म्स अलाउड नहीं थे, जो एग्जिस्टिंग थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए. डिफरेंस नोट करना आप. न्यू फर्म्स मतलब फॉरेन कैपिटल वाज नॉट अलाउड, वो तो 91 में हुआ. रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे रिलैक्स किए गए 91 में नए फर्म के ऊपर. बट 1980s में जो एग्जिस्टिंग फर्म थे ऑलरेडी मार्केट के अंदर, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे वो रिमूव किए गए. दैट मींस दे वर अलाउड टू एक्सपैंड. न्यू फर्म्स वर नॉट अलाउड टू एंटर, but they were allowed to expand. But after 91, newer firms were allowed to enter. That means it promoted the market. So it was a pro-market policy in 91, and in 1980 it was pro-business policy. The established firm were benefited. The incumbent, उनके लिए beneficial था. (1990s) 3.2, 5.7, 7.3, ओवरऑल 5.8. ठीक है. रिमेंबर यहाँ पे डेकेडल लिख रहे हो तो इसमें भी डिवीजन होगा एक्चुअल में, जब आप फर्दर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो. मतलब 90s के डेकेड को भी तो आप डिवाइड करोगे. मतलब 96 तक अलग स्टोरी है और 97 ऑनवर्ड्स अलग स्टोरी है. ये आपने ओवरऑल पूरे डेकेड का लिखा है. देन फ्रॉम 2002 टू 2007 ये प्लान पीरियड के अकॉर्डिंग है. 2.4, 9.2, 8.8, 7.6. ठीक है. सो दिस प्लान वाज, प्लान के टर्म में प्लान से फेमिलियर हो. 5-year प्लान 1951 to 56, 56 to 61 second, 60s 51 to 56, then 56 to 61, 61 to 66. ये 3 प्लान कंटिन्यूटी में हो गए. 66 के बाद ड्यू टू कंटिन्यूस ड्राउट देयर वाज प्लान हॉलिडे. सो 69 ऑनवर्ड्स पे प्लान है. 69 to 74, 74 to 79. बट 74 to 79 के बीच गवर्नमेंट चेंज भी है, बट सेम प्लान को रोल ओवर कर दिया गया, इसलिए उसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं. 1980 break, that is there was no plan in that period. फिर 1980 to 85, 85 to 90, फिर crisis in 1990. So 91, 92 there was no plan. 92 to 97, 97 to 2002, 2002 to 7, 2007 to 12, और फिर 2014 ऑनवर्ड्स वो नीति आयोग में चेंज हो गया. ठीक है. तो ये ओवरऑल प्लान पीरियड के लिए, मतलब जब आप लिख रहे हैं तो यू कैन कोट विच प्लान यू आर रेफरिंग टू. 2007 to 2012, 3.3, 6.7, 9.9, and overall 7.9. So now service sector growth improves. So this was mainly characterized by high rate of growth now, and mainly determined by the growth of the service sector. Mainly determined by the growth of service sector. Clear? Now after that इकोनॉमिक सर्वे का टेबल ले रहे हैं, बट ये सर्वे जो उस ईयर के लिए अवेलेबल थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वेट ईयर वाइज डिवीजन दे रहा है. 2014-15 द एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज नेगेटिव 0.2, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.5, सर्विसेज 9.7, ओवरऑल 7.5.
2015-16 agriculture 0.7, industry 8.8, 9.7 overall 8. Twenty 16-17 4.9, 5.6, 7.7, 7.1. So there was a genuine concern related to the farm distress. ठीक है, वो 18-19 के क्वेश्चन के अंदर भी आप देखोगे. तो फार्म डिस्ट्रेस दैट मीन्स फार्मर सुसाइड एटसेट्रा, वो जो नंबर ऑफ केसेस थे वो 17-18 के आसपास ज्यादा थे. एंड द ग्रोथ इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग दैट. सो अ नेगेटिव ग्रोथ रेट जनरली, रिमेंबर व्हेनेवर यू फाइंड अ वेरी लो ग्रोथ रेट, तो वो हमारा लो बेस हो जाएगा. अगर वो लो बेस हो गया तो उसके बाद का ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो ऑब्वियसली हायर होगा. जैसे करंट जो क्वार्टर है 2021-22 के लिए जो क्वार्टरली ग्रोथ आया है, और क्वार्टरली ग्रोथ है 20.1% है, बट 20.1% है बिकॉज ऑफ व्हाट, द पास्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट. तो वो पास्ट का नेगेटिव ग्रोथ रेट है, उसके बाद का जो ग्रोथ होगा ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ दैट मींस वो तो स्टैटिस्टिकल डेटा है. पास्ट का जैसे बेस कम हो गया तो उसके बाद का जो सब्सिक्वेंट ग्रोथ होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट विल अपीयर हाई. सो जनरली वो जब लो ग्रोथ होता है उसके बाद का जो ग्रोथ रेट है वो हायर आ जाएगा. सो 2016-17, 2017-18 2.1, 4.4, 8.3, 6.5. ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे जो 17-18 का था उसमें थे ये डेटा. 17-18 के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको ये डेटा है. बट आफ्टर दैट देयर वाज अ चेंज इन मेथोडोलॉजी. तो चेंज इन मेथोडोलॉजी के बाद जो 18-19 का सर्वे आया उसने उस पास्ट डेटा को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया. ऑब्वियसली मेथोडोलॉजी बदल जाएगी तो सारा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन डिफरेंट हो गया. आपको उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है कि आपने गलत लिख दिया. अगर आप पास वाला लिखोगे या ओरिजिनल, आप बस उसका सोर्स कोड कर दो, ये ले आपने उस सोर्स के अकॉर्डिंग लिख रखा. तो एक चेंज बेसिकली इन मेथोडोलॉजी है. देयरफॉर इकोनॉमिक सर्वे जो 2018-19 का है उसने 2016-17 में एग्रीकल्चर का ग्रोथ 6.3, 7.7, 8.4, 7.9. freeze out. ठीक है, 6.3, 7.7, 7, 8.4 और 7.9. तो 2016, अब ये 16-17 का एक्चुअल में ये वैल्यू ओल्ड वैल्यू ही है, मेथोडोलॉजी डिफरेंट होने के बाद ये वैल्यू होगी. ठीक है, इसलिए करंट गवर्नमेंट को आप मतलब उसने डेटा को एक्चुअल में क्या कर लिया, डेटा अगर खराब हो रहा है तो डेटा को ही आप चेंज कर लो. ठीक है, नाउ ग्रोथ अपीयर्स गुड. सेवनटीन 18, 5, 5.9, 8.1, 6.9. और 18-19 2.9, 6.9, 7.5, 6.6.
ठीक है, करंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डेटा लिख रहे हैं, लास्ट ईयर का डेटा लिख लीजिए ऐड करके, और फर्दर उसको आप चेंज कर लेना। बट सर्वे या जो लेटेस्ट बजट है उस बजट के अकॉर्डिंगली जो ग्रोथ का कंपोजिशन है, we'll take it on first page। यहाँ तक क्लियर है? 2018-19 तक इसमें मेंशन कर रखा है। टेक इट। इसमें ईयर सेक्टर वाइज अलग अलग जब आप सर्वे करेंगे, मतलब डिफरेंट ईयर का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, वहां पे लिख लेना। बट अभी ओवरऑल मैं यहाँ ग्रोथ लिख दे रहा हूँ। ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी करंट करंटली, देखो इसमें जीडीपी का जो ओवरऑल ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, इसमें अलग अलग डेटा मिले जो लास्ट सर्वे अवेलेबल है। Q1, सो क्वार्टर मीन्स ओवरऑल इंटायर ईयर को अगर आप 4 डिफरेंट क्वार्टर में ले रहे हैं तो अप्रैल मई जून, ये Q1 का ग्रोथ है। और Q2, इन Q1 इट वाज -23.9, सो दिस इज Q1 ऑफ 2020। ठीक है, सो अप्रैल मई जून, सो जस्ट जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, मार्च फरवरी 2020 इट स्टार्टेड, सो ये दिस वाज द फेज ऑफ फर्स्ट लॉकडाउन। देन Q2 वाज -7.5, और दिस इज फर्स्ट हाफ 6 month ओवरऑल -15.7। सेकेंड हाफ का क्वार्टरली इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड हाफ वाज -0.1, so economy was rebounding, it was recovering। 2020-21 the overall growth was 7.7%, overall 7.7%। ये हो गया 2021 मार्च तक के लिए। और अगर आप फर्दर ऐड करते हैं तो Q1 ऑफ 2021-22 जो करंटली चल रहा है, द ग्रोथ वाज 20.1। So economy is basically what we say that the V-shaped recovery, so a steep fall and then the steep recovery, a steep fall and then the steep recovery। तो करंट इंफॉर्मेशन ये है, करंट डेटा। एग्रीकल्चर में 3.4, ये 2020-21। रिमेंबर, ओवरऑल नेगेटिव, but agriculture, that means during this lockdown period the industry were hit more as compared to, in fact agriculture helped the economy to sustain some growth, agriculture helped the economy to sustain some growth, and industry was -9.6, industry was -9.6 because of lockdown, and most severely hit was
services, negative 16%. But negative 16% is first half of 2021. And it was negative 8.8% in 2021. क्लियर? तो ये अभी तक का डेटा जो अवेलेबल है वो आपने एक जगह लिख रखा है. Minus 8.8 was overall for the entire year, and this is just for first half. Remember, apart from this data, you must be familiar with whatever the composition. That is, what is the share of agriculture, share of industry, and share of services during these periods or currently का information. But this is basically for the growth record. ठीक है, अगर कोई गैप है तो उसको सप्लीमेंट करना, बट लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में अवेलेबल हुई है, अब जहां भी आपने इस इंफॉर्मेशन को लिख रखा है, जस्ट लीव सम स्पेस ब्लैंक. ठीक है, वो ब्लैंक स्पेस आप जब फरवरी मार्च में न्यू सर्वे आएगा उस समय उसको फिल कर लीजिएगा. ठीक है, मतलब आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो एक हाफ पेज एटलीस्ट वहां पे भी छोड़ के रखना, या फुल पेज. नेक्स्ट ईयर का सर्वे हुआ या बाद का सर्वे हुआ, उसको आपको वहां पे एक ही जगह रहेगा इन्फॉर्मेशन सारा. So the same information, remember, this table we will be using in multiple classes. In the sense, suppose when we are studying agriculture only, so when we are studying agriculture only, then the relevant data will be this. अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ को एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चन आता है तो फॉर दैट पर्पस एग्रीकल्चर वाले से डेटा रेलिवेंट हो जाएंगे. बट व्हेन यू एक्सप्लेन एग्रीकल्चर, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द ओवरऑल ग्रोथ आल्सो, सो एग्रीकल्चर कॉलम एंड दिस जीडीपी कॉलम. व्हेन यू आर स्टडिंग द केस ऑफ सर्विसेज, तो सर्विस सेक्टर का डेटा आपके लिए रेलिवेंट हो गया. हाउ द ग्रोथ ऑन सर्विस सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ ओवरऑल जीडीपी. So in the industry, for the services, for the agriculture, ये अलग अलग क्वेश्चन के लिए भी रेलिवेंट होंगे. ठीक है, and this information you can present in terms of graph also. just briefly एक टेबल ड्रॉ कर लिया, उसको आप अगर फैक्ट याद ना हो तो आप ऐसे प्रेजेंट कर देना. मतलब अगर आपको ईयर वाइज वो याद नहीं रहता है, then you can present it in this form as well. You can take here time or year, and you can write here GDP. So GDP was growing at a low rate of growth from 1950 to 1980. This was one dot. From 1980 to 1990. Or 91. And from 91 to 2098, further higher growth. From 98 onwards, we find a slowdown. Slope decrease करना है till 2003-4. After that, we have a very high rate of growth for next 5-6 years. 2009-10. From 2009-10, again we find a low rate of growth. ठीक है, ये low rate of growth you can extend till 14-15 or till you can say demonetization. तो ये जो उसके बाद का जो growth rate है, it was always less as compared to what we achieved during this period. उस पीरियड को तभी we say it a dream run. We have failed to achieve that much growth since then.
और रिसेंट में अगर आप उसको फर्दर इसको स्लो डाउन के फॉर्म में रखने हैं, और फॉर 2021 not only slope is declining but slope becomes negative growth rate. So negative growth, that means now the slope is negative, but after that जो next quarter है उसमें increase होगा and that increase will be very high. So this is basically forming that V-shape recovery. This is basically the V-shape recovery in 2021-22. So we are basically referring to that. Recent question is basically for this purpose. So for better presentation, obviously टेबल ड्रॉ करना याद रखना आपके लिए feasible नहीं है. लिखते समय थोड़े बहुत डेटा याद रख सकते हैं, but it is not feasible है. And we are not expecting, and UPSC is not expecting कि आपको टेबल याद होगा. But you can present it in this form. इससे फेज क्लियर हो रहा है. And for every change in trend, you have to explain the reason. What was the reason for this V-shaped recovery? What was the reason for slowdown? What was the reason for high growth here? What was the reason for high growth here? What was the reason for slowdown here? And so on. Clear? So in ये आज की क्लास के लिए यहाँ तक ये मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में उसका ग्रोथ रिकॉर्ड लिखा है. Now what was the reason for the specific phases that we have to explain. And one or two article you can refer. One is by Arvind Subramaniam. वो स्टार्ट वाले फेज को एक्सप्लेन कर देगा. मतलब रिमेंबर देयर इज नो वन सिंगल आर्टिकल व्हिच इज एक्सप्लेनिंग एंटायर, सो यू हैव टू सप्लीमेंट इट. सो इनिशियल आर्टिकल विल बी बेसिकली फॉर दिस पर्पस एंड द रीसेंट वन विल बी बेसिकली फॉर दिस पर्पस. लास्ट के जो चेंजेस है उसमें इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ज्यादा यूज कर देंगे. क्लियर? सो योर ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू एक्सप्लेन दिस पार्ट. सो दिस विल बी द वे. सो आई विल बी डिक्टेटिंग दीज थिंग्स इन क्लास. और ये बैच दोनों ही कोर्स के लिए सेम चल रहा है. मतलब पेपर 2 की जो क्लास है, वन बैच स्टार्टेड ऑन 28th of May और नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है 18th October. ठीक है, इन दोनों के लिए याद रखिएगा पेपर 2 की क्लास सेम चल रही है. दोज आर ऑनलाइन. मतलब पेपर जो 28th में से क्लास चल रहा है उसमें पेपर 1 कंप्लीट हो गया, अब वहाँ पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है. और जो 18th October से बैच स्टार्ट हुआ उसमें साइमल्टेनियसली पेपर 1 and 2 बहुत चल रहे हैं. क्लियर? तो ये ज्यादा इसमें टाइम नहीं, अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 30 to 40 लेक्चर. इसमें ये पेपर 2 का जो कंटेंट है वो हो जाता है. बट पेपर 2 में यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट. तो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके एंड से रहेगा. एवरीडे न्यूज़पेपर से आपको सप्लीमेंट करना है और बाद में भी उसको ऐड करते रहना, अपडेट करते रहना. तो आई थिंक मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया, टॉपिक वाइज स्ट्रक्चरिंग दे दिया, सोर्सेज बता रखे हैं, मटेरियल आपके पास अवेलेबल है और उसी फॉर्मेट में करना है. एंड वी हैव स्टार्टेड विद वन टॉपिक दैट इज ग्रोथ, इट्स कंपोजिशन एंड ट्रेंड. सो विल कंप्लीट दैट एंड देन विल मूव टू अदर टॉपिक. क्लियर?